Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Have you ever been in a room, maybe a meeting or a lecture, something like that, and something felt just, undeniably obvious to you? Something that seemed so clearly true or maybe fundamentally wrong. Yet everyone else, especially people in charge, seemed to just deliberately ignore it. Or even praise the opposite. Yeah, like praising something that just wasn't there. Exactly. Right. Remember that weird, quiet doubt that creeps in? Yeah. That really unsettling feeling like you're the only one seeing through some kind of shared illusion. The feeling. That sensation, that quiet disquiet. That's really at the heart of what we're going to explore today. It's a feeling I think a lot of people recognize, that sort of solitary clarity when everyone else seems to agree on something else. And yeah, that's the kind of deep, thought-provoking territory we're heading into. So what we're doing today is basically summarizing, kind of guiding you through this really fascinating and rigorously peer-reviewed article. It was recently published in the Academy of Management Review Journal. Which is a big deal in the field. Oh, absolutely. For anyone maybe new to academic research or, just really curious, this journal is considered absolutely top tier, super influential. People often mention its rankings like FT50 and UTD24. Right, signifies quality and impact. The article itself is called Management Theory, Jungle, Myth, or Hoax. And it's written by Professor Hugh Willmott, who's affiliated with Bayes Business School and Cardiff Business School. It's a really thoughtful piece. It really is. And look, whether you dive into academic papers regularly or not, or maybe you're just starting your own research journey, we honestly urge you to take the time to read it. It's incredibly well crafted, very insightful. Yeah, definitely worth the read. We've put the link right there for you in the show notes. Easy to find. So this paper, it really challenges us to rethink some fundamental ideas about management itself. Always a good exercise, right? For sure. And what's really interesting is how Professor Willmott looks at what's called mainstream management theory, or MMT. For a long time, it seems, MMT has been understood mainly through two big metaphors. Okay, right. These metaphors, let's unpack those. You said jungle and myth. That's them. So the jungle one, that was popular back in the, 60s to 80s. It painted MMT as this incredibly thick, sprawling, overgrown place. Exactly. Just overflowing with new theories, often clashing with each other. Things like population ecology, institutional theory, all sort of fighting for space. Like a messy, untamed wilderness of ideas. Yeah. And the idea was, we need to somehow clear this jungle, get to some unified scientific truth. Pretty much. But that turned out to be really, really difficult. Then you have the myth metaphor. Okay, myth. How does that one work? This view sees MMT more as a collection of different ways people make sense of things in organizations. They're practically appealing, maybe useful, but not always strictly rational. Oh. And the biggest myth, the sort of meta-myth, is the idea that management theory itself is objective, totally value neutral, somehow above all the myth-making, even while it's busy creating its own myths. Right. So myths about being myth-free. Precisely. Now, these metaphors, jungle and myth, they've been useful. But the article argues they miss something really crucial. Which is? How MMT, just like any scholarship really, is absolutely soaked in values and normative goals, even when it tries really hard to look neutral. That's a really important point. How those hidden values can shape what gets presented as just, objective fact. Exactly. And this is where the article brings in this powerful new way of looking at it. A really eye-opening alternative. The hoax. The hoax, yeah. Mm-hmm. It definitely grabs your attention, doesn't it? It does. So what does hoax mean in this context? Not just like a prank. Well, Professor Willmott explains that hoaxes aren't always, deliberate lies. Often they can be inadvertent. They rely on people placing trust where maybe it's not fully warranted or being willing to suspend disbelief. Why would people do that? Often because there's some perceived benefit, right? Material gain or maybe just fitting in symbolic status. And these hoaxes, they can be one-off things, episodic, or they can become systemic. Systemic, like built into the system. Yeah, institutionalized, just taken for granted as the way things are, part of the culture, part of the belief system. Okay, and the article uses that famous story to explain it. The Emperor's New Clothes. Yes. It's such a perfect analogy here. You remember the story, right? The emperor who's super insecure about his image. And the two fraudsters who sell him invisible clothes.
invisible clothes, visible only to the smart people, the ones fit for their jobs. And of course, everyone pretends, the courtiers, the crowd, they all pretend they can see these magnificent clothes. Out of fear, mostly. Fear of looking stupid or incompetent. Exactly. Until that one kid just blurts out the truth, the emperor has no clothes. Right. So how does that connect to management theory? Well, the article draws these direct parallels. Think about the pretenses of MMT that some critics have pointed out, or the way some scholars might feel that pressure, that imposter syndrome, when they're trying to publish in these top journals, maybe feeling they have to sideline what they really think is important to fit the mold. It's like pretending to see the emperor's clothes to prove you're fit for the academic system. So the idea that certain academic processes claim to produce purely neutral knowledge. Like the weavers claiming their cloth was amazing. When actually, maybe the social dynamics, the power plays are kind of laid bare if you look closely. Precisely. And again, it's not saying MMT is literally a hoax in the sense of a deliberate fraud everywhere. It's using the metaphor to shine a light on these hidden dynamics, the unspoken rules, the assumptions we don't question. It's asking us to look deeper. Okay, that makes sense. So if we use this hoax lens, what does it reveal? The article points out 4 specific features of MMT when we think about it this way. The first one is mendacity. Mendacity, yeah, which basically means deceit. But it includes self-deception too, and it can be intentional or unintentional. Often, it's systemic, baked into the way things are presented. How so? Give me an example. Well, think about the managerial ideal that often comes across in MMT. Sometimes it presents the manager as this neutral helper, just coordinating work to achieve goals. Right. Sounds reasonable. But that picture often conveniently ignores the messy realities of power or the deep-seated inequalities related to class, gender, race that managers have to navigate, or even how managers themselves can be under pressure from their bosses. So it's a kind of selective truth. It smooths over the conflicts and the difficult stuff. Exactly. It might disregard the actual conditions people work under or how employees might resist. It presents an ideal that might not match reality. Another example given is scientific management, like Taylor's work, often seen as foundational, right? Sure. But the article points out it contained, mendacious accounts, like certain experiments that weren't quite as reported, and it tended to ignore the lived realities of the workers. Okay, I see. So mendacity is the first feature. What's the second? The second is fantasies of fitness. Fantasies of fitness. What's that about? It's about how MMT often sells this appealing idea, this fantasy to people, students, managers, that learning this stuff will make them fit for the job, fit for managerial office, or even academic success. Like, learn this theory and you'll be a great manager. Kind of. And the article brings up this really striking quote from a textbook author, Robbins. He apparently admitted quite openly that his books pushed a certain ideology. He said something like, "We need to genuflect to the gods of productivity, efficiency, goals, etc." Wow, that's blunt. Isn't it? It reveals what's often not said out loud, that MMT tends to really value productivity and efficiency above almost everything else, while other crucial things like, say, social responsibility or environmental sustainability And get pushed to the side. Marginalized. often, yeah, or just treated as less important. And this links to publishing, too. Getting into those top journals often means doing the right kind of work, the kind that aligns with dominant, often corporate values, sometimes ignoring the really big problems humanity faces. So it shapes not just what's taught, but what research gets valued and seen. Okay. Feature number 3. Number 3 is stifling critical reflection. Okay, stifling criticism. How does that work? The idea here is that MMT can, perhaps unintentionally, cultivate what's called a trained incapacity to really see or question its own assumptions, its own pretenses. A trained incapacity. Yeah, like you learn the theories and methods so well, you sort of stop being able to step back and critique them fundamentally. Ideas that challenge the core assumptions, they often get dismissed as being, value-laden or not objective. As if the mainstream stuff isn't value-laden. Precisely. Or challenging ideas get kind of watered down, repackaged so they're safe and don't really threaten the status quo. Can you give an example of how this happens in education? Well, think about business schools often trying to be like science departments, aiming for that kind of legitimacy. This can lead to encouraging rote learning, a really surface approach. Like memorizing frameworks for exams. Exactly. Multiple choice tests on, say, Porter's 5 forces,
You memorize the facts, but there's maybe less focus on digging into the power dynamics behind it or the real societal impact or questioning the framework itself. The article mentions things like the UN Principles for Responsible Management Education often being met with a shrug. So the way it's taught and assessed can actually discourage deeper critical thinking. That's the argument, yeah. Okay, and the last feature, number 4. The fourth one is normalized cynicism. Normalized cynicism, what does that mean? This points to how business schools sometimes start to mirror the very transactional, maybe bottom line values of the corporate world they study, and in doing so, perhaps sacrifice some of the older, more collegial academic values. How does that show up? The article talks about journal rankings and the whole peer review process. Sometimes, it seems, the substance of the research becomes less important than where it's published the ranking of the journal, its impact factor. The metrics become the main goal. It can feel that way. Authors get coached on how to achieve hits in the top journals. Sometimes journals might even, suggest citing other articles from that same journal, partly to boost its metrics. Oh, really? And the whole double-blind review process, which is meant to ensure fairness, well, the secrecy can sometimes inadvertently cover up questionable practices or biases. It can lead to this feeling, this normalized cynicism where people know the system isn't perfect. They see the gap between the ideal of impartiality and the reality. But they sort of go along with it. They insist upon the mask, as the article puts it. Yeah. There's an awareness of the gap between the ideological mask and social reality, but it becomes just normal, part of the game. Okay, so those are the 4 features. Mendacity, fantasies of fitness, stifling critical reflection, and normalized cynicism. That's quite a critique when you lay it out like that. It really is. It uses the hoax metaphor to frame these observations in a very pointed way. So we've seen how this lens works. But what are the bigger implications? The article raises 4 key issues stemming from thinking about MMT as a hoax. First off, the big one, is this actually theory? Or is it just, a strong opinion piece of polemic? Right, a fair question. And the article tackles it head on. It argues strongly that, yes, this is a form of theorizing, specifically narrative theory. It demonstrates how the hoax concept meets most of the standard criteria we use for evaluating theory in social science, things like purpose, explaining a phenomenon, offering insights, having relevance, being backed by evidence. Most criteria. What's missing? It acknowledges that defining strict boundary conditions, like saying exactly where the theory applies and doesn't apply, is inherently tricky for any theory about social reality, because theories themselves help shape the reality they describe. But overall, it makes a strong case for its theoretical contribution. Okay, so it defends itself as rigorous theorizing. That leads to the second issue. What about relevance to grand challenges, like inequality, climate change, the big stuff? This is crucial. The hoax lens, the article argues, helps reveal how MMT might actually obscure or hinder effective responses to these massive global problems. How? By promoting certain values over others. Partly, yes. Remember the focus on efficiency and productivity. The article points to how businesses might talk about socially inclusive growth, but deep inequalities hang on or even worsen. Or how corporations might respond to climate change with economic interventions that ensure profit maximization, regardless of the social or environmental cost. So they might be, as the article quotes someone saying, causing the very problems they're asked to solve. Exactly. And MMT, by perhaps downplaying these conflicts or focusing elsewhere, might contribute to this misrecognition. It's like the courtiers admiring the invisible robes while the emperor is, naked. Yeah. Okay, third issue. What about reconciling MMT with critical management studies, or CMS? They often seem at odds. They do. MMT often dismisses CMS critiques as being too political, or maybe says, we already covered that, perhaps pointing to something like institutional theory as being critical enough. But CMS scholars don't buy that. Generally, no. CMS argues that MMT sometimes uses a kind of newspeak, borrowing that term from Orwell. Newspeak. Meaning using language that sounds neutral or even progressive, like maybe talking about environmentalism instead of climate justice, but which actually serves to mask a more conservative underlying stance and silence more radical or challenging viewpoints.
The core idea is that real dialogue, real reconciliation can only happen if MMT acknowledges its own inherent values instead of just claiming neutrality. That makes sense. You can't really have a proper conversation if one side pretends it doesn't have a viewpoint. Okay, and the final issue raised. The fourth one is the significance for management education itself. Right, back to the classroom. The article argues that MMT, through the curriculum, can end up perpetuating injustice by normalizing what it calls the fantastical quest for endless capital accumulation. Wow. Strong words. It connects the way management is taught directly to those larger crises, politico-economic, environmental, but then it introduces critical management education, CME, as a counterforce. Okay, what does CME do differently? CME aims to challenge those standard MMT narratives, like questioning the idea that employees are the most valued assets when in reality costs related to them are often the first to be cut. CME actually reinterprets the Emperor's New Clothes story again. Oh, how? It sees the weavers, the fraudsters, maybe as like tutors who are actually exposing the institutionalized deception. Yeah. And the child's cry, the Emperor has no clothes, is seen as an act of activism, of speaking truth to power. So CME isn't just about learning theories. It's about learning to critique, to diagnose problems. Exactly. And hopefully to transform the underlying conditions that create injustice. It wants to equip students with critical thinking skills to see beneath the surface, question assumptions, and maybe work towards something better, more just. That's a really powerful reframing of the goal of education. Yeah. So stepping back from the article for a final thought. As you listening, go about your own work or studies, or even just try to make sense of the world, it's worth asking, isn't it? Yeah. What invisible clothes might we be admiring without realizing it? In our own fields, our workplaces, our daily lives. What are those unspoken assumptions, those bits of normalized cynicism maybe, that stop us seeing the whole picture? Or stop us from challenging something that feels intuitively wrong? It really comes back to that child in the fable, doesn't it? The courage to question, to call out what seems obvious but is being ignored. Yeah. The article suggests that true understanding, and maybe even real change, starts there. Yeah. With that courage. It's about this collective effort maybe to expose the hidden values, the sometimes disturbing realities, so we can move towards scholarship and maybe a society that's genuinely in the service of justice. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, সেই সম্রাটের গল্পটা, যিনি এমন এক অদৃশ্য পোশাক পরেছিলেন যা কেবল বোকা বা অযোগ্য লোকেরাই দেখতে পায় না। হ্যাঁ, মনে আছে। সবাই যখন পোশাকের প্রশংসায় ব্যস্ত। ঠিক, তখন একটা বাচ্চা ছেলে সত্যিটা বলে দিল, সম্রাট তো কিছুই পড়েননি। এই পরিচিত গল্পটা কিন্তু আমাদের অনেক সময় প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলো নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শেখায়। আচ্ছা, ম্যানেজমেন্ট বা ধরুন ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের জগতেও কি এমন কোনো অদৃশ্য পোশাক থাকতে পারে? মানে এমন কিছু যা আমরা খুব স্বাভাবিক বা সায়েন্টিফিক বলে ধরে নিচ্ছি? একদম, কিন্তু সেগুলো আসলে কতটা বাস্তবসম্মত, কতটা নিরপেক্ষ? এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। আজকের আলোচনাটা এই গভীর প্রশ্নটা নিয়েই। আমরা হিউ উইলমোটের একটা অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ নিয়ে কথা বলবো। প্রবন্ধটার শিরোনাম ম্যানেজমেন্ট থিওরি, জাঙ্গল, মিথ অর হোক্স। হ্যাঁ, আর এটা প্রকাশিত হয়েছে একাডেমির অন্যতম সেরা জার্নাল একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট রিভিউতে, যেটা FT50 এবং UTD24 তালিকায় থাকা একটা দারুণ সম্মানজনক প্রকাশনা। ঠিক। লেখক হিউ উইলমট বেইজ বিজনেস স্কুল আর কার্ডিফ বিজনেস স্কুলের অধ্যাপক। এই আলোচনাটা মূলত সেই সব শ্রোতাদের জন্য বেশ কাজের হতে পারে যারা গবেষণা জগতে নতুন পা রাখছেন এবং তত্ত্বের পেছনে দর্শন, তার প্রভাব এসব নিয়ে ভাবতে আগ্রহী। আর একটা অনুরোধ থাকবে, যারা এই বিষয়ে আরও গভীরে যেতে চান তারা অবশ্যই মূল প্রবন্ধটা পড়ে দেখবেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেয়া থাকবে। এটা কিন্তু সত্যি একটা দারুণ চিন্তাশীল আর খুব কঠোরভাবে রিভিউ করা লেখা। হ্যাঁ, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার চেয়েও এই লেখাটা পড়া বেশি জরুরি মনে হয়। হ্যাঁ, ঠিক। আচ্ছা, আলোচনায় ফেরা যাক। সাধারণত ম্যানেজমেন্ট তত্ত্বের জগৎটাকে একটা জঙ্গলের মতো ভাবা হয়, তাই না? হ্যাঁ, যেখানে নানা রকম তত্ত্ব গজিয়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, কেউ কেউ আবার মিথ বা পৌরাণিক কাহিনীর মতোও দেখেন। কিন্তু উইলমট একটা আরো চ্যালেঞ্জিং রূপক ব্যবহার করেছেন, ধাপ্পা বা হোক্স। ঠিক, তার যুক্তিটা হলো
অনেক যে মেইনস্ট্রিম ম্যানেজমেন্ট থিওরি বা এমএমটি আছে সেগুলো নিজেদেরকে বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতার একটা মোড়কে রাখে। আচ্ছা। কিন্তু বাস্তবে এগুলোর ভেতরে নির্দিষ্ট কিছু ভ্যালিউজ বা ইন্টারেস্ট লুকানো থাকে, অনেকটা সেই সম্রাটের অদৃশ্য পোশাকের মতো। তার মানে এই তত্ত্বগুলো ক্ষমতা বা ধরুন শোষণ, এমনকি সামাজিক বা পরিবেশগত যে ক্ষতি, হ্যাঁ, এই বিষয়গুলোকে খুব স্বাভাবিক বা অনিবার্য বলে চালিয়ে দেয়। এই ধাপ্পা বা লুকানো স্বার্থের ব্যাপারটা আরেকটু যদি স্পষ্ট করা যায়, কোনো উদাহরণ আছে কি প্রবন্ধে? অবশ্যই। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দিয়েছেন উইলমট হিউম্যান ক্যাপিটাল থিওরি বা এইচসিটি। আচ্ছা। এই তত্ত্বটা সাধারণভাবে কি বলে যে মানুষ নিজের স্কিল, নিজের জ্ঞান বাড়িয়ে ভালো চাকরি বা কেরিয়ার গড়তে পারে। হ্যাঁ, এটা তো বেশ মোটিভেশনাল শোনায়। শোনাই তো বটেই, কিন্তু উইলমটের মতো সমালোচকরা বলছেন এই তত্ত্ব আসলে কাঠামোগত সমস্যাগুলো আড়াল করে। যেমন ধরুন ভালো চাকরির অভাব বা সুযোগের অসমতা। এই বিষয়গুলো থেকে নজর সরিয়ে ব্যক্তির ঘাড়ে সব দায় চাপায়। ওহ, মানে কেউ সফল না হলে সেটা তারই ব্যর্থতা, সিস্টেমের কোনো দোষ নেই। একদম। প্রবন্ধটা এটাই দেখাচ্ছে যে কিভাবে এই ধরনের তত্ত্বগুলো সিস্টেমের ব্যর্থতা ঢাকার একটা উপায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। বুঝেছি। তাহলে ব্যাপারটা শুধু একটা ভুল তত্ত্ব নয়, বরং এমন একটা তত্ত্ব যা একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে, মানে একমাত্র সত্যি বা স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। ঠিক। নতুন গবেষকদের জন্য এটা তো বেশ ভাবনার বিষয়, কারণ আমরা তো গবেষণার শুরুতে প্রায়শই এই প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোকে প্রশ্নাতীত হিসাবে গ্রহণ করি। ঠিক তাই। এখান থেকেই উইলমটের পরের পয়েন্টটা আসছে। এই তত্ত্বগুলো কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে? কিছু নির্দিষ্ট অ্যাজাম্পশন বা অনুমানের উপর। সুমন্ত ঘোষাই জাননটা মনে করিয়ে দিয়েছেন, সামাজিক বিজ্ঞানীরা যখন বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে নিজেদের মতাদর্শ প্রচার করেন তখন তার ফল কিন্তু খুব মারাত্মক হতে পারে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তাই তত্ত্বগুলো কিভাবে তৈরি হচ্ছে, কোন অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে কাদের স্বার্থ রক্ষা করছে, এই প্রশ্নগুলো করাটা খুব জরুরি। আর উইলমট এটাও দেখাচ্ছেন যে একাডেমিক জগতে, মানে জার্নাল পাবলিকেশনের সিস্টেমে, হ্যাঁ, সেখানে অনেক সময় এই ধরনের ক্রিটিক্যাল চিন্তাভাবনাকে ডিসকারেজ করা হয়, যা প্রকারান্তরে এই ধাপ্পাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। হ্যাঁ, এটা আসলেই ভাবার বিষয়। বিশেষ করে গবেষণার শুরুতে প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা কঠিন মনে হয়। তাহলে মূল কথাটা দাঁড়াচ্ছে, ম্যানেজমেন্ট তত্ত্বের জগৎটাকে শুধু জটিল বা কাল্পনিক ভাবলে চলবে না, বরং উইলমটের কাজ আমাদের সতর্ক করছে যে এর মধ্যে এক ধরনের ধাপ্পার উপাদানও থাকতে পারে, যা কিনা গভীর সমস্যাগুলোকে আড়াল করে দেয়। একদম। তাই তত্ত্বগুলোকে কেবল গ্রহণ না করে একটু ক্রিটিক্যালি দেখা প্রয়োজন। প্রশ্ন করা দরকার, এ তত্ত্ব কাদের সুবিধা করে দিচ্ছে, কোন বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাচ্ছে, তাই না? ঠিক। আর এখানেই আজকের আলোচনার শেষ প্রশ্নটা রেখে যেতে চাই, বিশেষ করে যারা গবেষণা শুরু করছেন তাদের জন্য। বলুন। গবেষক হিসেবে আমাদের দায়িত্বটা ঠিক কি, যখন আমরা এমন কোনো তথ্য নিয়ে কাজ করি যা হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে সামাজিক বৈষম্য বা পরিবেশের ক্ষতিকে স্বাভাবিক করে তোলে বা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে? এটা একটা গভীর প্রশ্ন। নিজেদের গবেষণা যাত্রায় কিভাবে এই ক্রিটিক্যাল সচেতনতাটা সবসময় বজায় রাখা যায়, এটা কিন্তু সহজ নয়। অবশ্যই সহজ নয়। এই প্রশ্নগুলো সত্যিই ভাবার। আর পুরো ব্যাপারটা বিস্তারিত জানতে আর নিজের মতো করে বুঝতে মূল প্রবন্ধটা পড়া খুব দরকারি। হ্যাঁ, লিঙ্কটা শো নোটসে আছে। লিঙ্ক আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, শো নোটসে রয়েছে, অবশ্যই দেখে নেবেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, एक सम्राट है, नए कपड़ों का शौकीन, लेकिन जो कपड़े उसे पहनाए गए हैं वो असल में है ही नहीं। हाँ। और फिर भी मतलब डर के मारे कोई कुछ कहता नहीं है, सिवाय एक बच्चे के। हाँ। क्या मैनेजमेंट की दुनिया में भी कभी कभी ऐसा कुछ महसूस होता है? बिल्कुल हो सकता है। आज ना हम ह्यू विलमॉट के एक ऐसे ही सोचने पर मजबूर करने वाले लेख पर बात कर रहे हैं। जी। ये लेख छपा है एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू जर्नल में। मैनेजमेंट रिसर्च की दुनिया में ये बहुत बड़ा नाम है। हाँ, काफी प्रतिष्ठित है। और हाँ, ये FT50 और UTD24 लिस्ट में भी हैं। विलमॉट जो है वो बेस बिजनेस स्कूल और कार्डिफ बिजनेस स्कूल से जुड़े हैं। अच्छा। हम यहाँ बस उस लेख के कुछ कह सकते हैं मुख्य आइडियाज पर बात करेंगे। ये एक झलक भर है। हाँ, पूरा लेख तो काफी गहरा है। बिल्कुल।
तो हम सचमुच चाहेंगे कि सुनने वाले समय निकालकर उस ओरिजिनल, डिटेल्ड और पीयर रिव्यूड लेख को जरूर पढ़ें। लिंक शो नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, वो जरूरी है। हमारा मकसद आज ये है कि मैनेजमेंट थियोरीज को, मतलब प्रबंधन सिद्धांतों को देखने का एक अलग नजरिया समझें, खासकर उनके लिए जो अभी अभी एकेडमिक रिसर्च में आ रहे हैं। जी, ये उनके लिए काफी काम का हो सकता है। तो मैनेजमेंट में कई सारे सिद्धांत हैं जिन्हें हम अक्सर MMT कहते हैं, मेन स्ट्रीम मैनेजमेंट थ्योरी। हाँ, MMT। और अक्सर ये सिद्धांत दावा करते हैं कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है, वैल्यू न्यूट्रल, किसी खास विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। यही दावा होता है। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है, क्रिटिकल मैनेजमेंट स्टडीज यानी CMS, जी, जो इन दावों पर सवाल उठाता है। विलमॉट बताते हैं कि MMT को समझने के लिए ना अक्सर दो मेटाफर्स, दो रूपकों का इस्तेमाल होता है, जंगल और मिथक। ये क्या है? बिल्कुल, देखिए, जंगल का रूपक वो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट थ्योरीज कितनी ज्यादा हैं, कितनी फैली हुई हैं। अच्छा। जैसे एक घना जंगल हो जिसे थोड़ा साफ करने की, समझने की जरूरत है। उनकी विविधता और बिखराव दिखाता है ये। ठीक है। और मिथक? और मिथक रूपक कहता है कि ये थ्योरीज थोड़ी कहानियों या मिथकों जैसी हैं। ये हमें मैनेजमेंट को समझने में मदद तो करती हैं, पर ये जरूरी नहीं कि ये पूरी तरह से मतलब लॉजिकल हो या बिल्कुल निष्पक्ष हो। ये अक्सर मैनेजमेंट की एक खास तरह की छवि बनाती हैं, शायद थोड़ी ज्यादा अच्छी छवि। समझ गया। और यहीं पर विलमॉट एक तीसरा थोड़ा चौंकाने वाला रूपक लाते हैं, धोखा, मतलब होक्स। हाँ, ये शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। धोखा से उनका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, शब्द थोड़ा तीखा है, मानती हूँ, पर यहाँ धोखे का मतलब सिर्फ जानबूझकर किए गए फ्रॉड से नहीं है। अच्छा। मतलब वो भी हो सकता है, पर इसका दायरा बड़ा है। ये एक तरह का भ्रम है, एक दिखावा जो अनजाने में भी पनप सकता है। जैसे वो सम्राट वाली कहानी में। बिल्कुल, जैसे सम्राट के नए कपड़ों की कहानी में वो बुनकर तो जानबूझकर धोखा दे रहे थे। हाँ। लेकिन तरबारी वो शायद खुद को और दूसरों को भी धोखा दे रहे थे। अपनी नाकाबिलियत के डर से सच नहीं बोल पा रहे थे। तो विलमॉट का तर्क है, और घोषाल जैसे और लोगों ने भी कहा है, कि MMT जो खुद को बड़ा साइंटिफिक और न्यूट्रल बताता है जी, वो असल में कुछ खास वैल्यूज, कुछ विचारधाराओं को शायद छुपा सकता है या उन्हें बढ़ावा दे सकता है। अच्छा। CMS का मानना है कि कोई भी सिद्धांत पूरी तरह वैल्यू फ्री नहीं होता। तो MMT का जो ये न्यूट्रलिटी का दावा है वो एक तरह का दिखावा या भ्रम हो सकता है। मतलब एक फसाड। हाँ, एक तरह का फसाड जो शायद अनजाने में एक्सप्लॉयटेशन या असमानता जैसी चीजों को नॉर्मल या ओके जैसा दिखा देता है, उन्हें नजरअंदाज करने लायक बना देता है। तो ये धोखा या दिखावा किस तरह से दिखता है? विलमॉट इसके कुछ लक्षण बताते हैं ना? हाँ। पहला शायद मिथ्यात्व। मेंडासिटी। हाँ, मिथ्यात्व यानी एक तरह की सच्चाई से दूरी, या कह लीजिए आत्मधोखा। ये जानबूझकर झूठ बोलना भी हो सकता है, या अनजाने में किसी ऐसी बात पर यकीन करना जो शायद पूरी तरह सच ना हो। जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट को ही लें, उसके कुछ शुरुआती दावे जितने मजबूत लगते थे बाद में उतने नहीं पाए गए। अच्छा। और दूसरा लक्षण है योग्यता का भ्रम, फैंटेसीज ऑफ फिटनेस। इसका मतलब कि ये सिद्धांत हमें एहसास दिलाते हैं कि हम सब कुछ समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि असलियत कहीं ज्यादा पेचीदा, ज्यादा अनिश्चित होती है। ये सिद्धांत कंट्रोल और एफिशिएंसी का एक बड़ा लुभावना भ्रम पैदा करते हैं। और तीसरा लक्षण इसी से जुड़ा है, आलोचनात्मक सोच का दमन, स्टाइफलिंग क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। मतलब सवाल मत उठाओ। हाँ, एक तरह से जो स्थापित मान्यताएं हैं, जो सिस्टम है, उस पर गहरे सवाल उठाने को डिस्करेज करना। ऊपरी लेवल की आलोचना या क्रिटिसिज्म तो ठीक है, पर गहरी समीक्षा या क्रिटिक से बचना। समझ गया। और चौथा था सामान्यकृत उदासीनता, नॉर्मलाइज्ड सिनिसिज्म। इसका मतलब कि लोग सिस्टम की कमियों को जानते तो हैं पर उन्हें अनदेखा करते हैं और बस बाहरी दिखावे पर, जैसे जर्नल रैंकिंग वगैरह पर फोकस करते हैं। बिल्कुल सही। लोग जानते हैं कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, पर फिर भी उसी में चलते रहते हैं, दिखावे पर जोर देते हैं। ये चारों लक्षण मिलकर उस धोखे या दिखावे की तस्वीर बनाते हैं जिसकी बात विलमॉट कर रहे हैं। और देखिए, जो लोग रिसर्च शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी मैनेजमेंट थियोरीज बेकार हैं या गलत हैं।
नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब बस इतना है कि हमें किसी भी सिद्धांत को आंख बंद करके मान नहीं लेना चाहिए। सही। उसे जस का तस स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि उसके पीछे कौन सी वैल्यूज छिपी हो सकती हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसके अनचाहे नतीजे क्या हो सकते हैं। ये हमें दावों को लेकर ज्यादा सचेत बनाता है और एक ज्यादा जिम्मेदार रिसर्चर बनने में मदद करता है। ये धोखा वाला रूपक जो है, ये हमें मैनेजमेंट सिद्धांतों को एक ज्यादा शायद चुनौतीपूर्ण लेकिन ज्यादा ईमानदार नजरिए से देखने का मौका देता है। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें स्थापित ज्ञान पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है, ठीक उस बच्चे की तरह जिसने सम्राट के नए कपड़ों का सच सबके सामने ला दिया था। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सब के लिए, खासकर नए शोधकर्ताओं के लिए। जी। अगर हम स्थापित सिद्धांतों में इन संभावित धोखे वाले पहलुओं को पहचानना सीख जाएं, मतलब उन दावों को जो शायद उतने न्यूट्रल या सच्चे नहीं है जितने लगते हैं, तो ये हमारे अपने रिसर्च के काम को और अकादमिक दुनिया में हमारे योगदान को किस तरह से बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, वो मूल लेख पढ़ना मत भूलिएगा, लिंक नीचे है।